क्योंकि ना गुस्से वाला दुखी बंदा आ गया कम। हाँ, कोई ऑनलाइन में भी बेटा बी चेयरफुल एंड बी एंथुसियास्टिक कम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning. Good morning. I am Atishay Jain from Ludhiana. ऊंची थोड़ा। I am Atishay Jain from Ludhiana. I did my studies till class 9th in DCM Residency School and continued till 12th in from KVM School. I pursued commerce as my stream in after class 10th as I have interest in business, finance, and economics. Okay, my input schools are not relevant to them. Because they don't know. They are not from Ludhiana. ये पीछे के बच्चे ये तो ये फोन फैंस भी बंद कर दो आवाज और डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे. So we need not mention I studied here, then I moved here. No need. So we straight away start again with the introduction. I am Atishay Jain from Ludhiana. I did my class. I pursued commerce stream in class 10th. After class 10th, because I had interest in business, finance, and economics. Later, I found interest in technology as well, and also I did internship at Motilal Oswal later to get deeper knowledge of finance. I am also a table tennis district champion apart from studies. You have just missed one important point. What about your family background? So your introduction is decent to good. मतलब, your introduction right now is 8 out of 10. But you have to mention my father is into Import business of of capital machines. so ये पता नहीं है. And mother is a House. homemaker. ठीक है. कई बार पूछ लेते हैं मदर का क्यों नहीं मेंशन किया. So थोड़ा सा बस वही ऐड करना है. Then it becomes 9 or 9.5 out of 10. But tell us about yourself, बोला तो family. Tell us about yourself. That is, you are family is part of you. Is important to you. Or introduce yourself. Many introduce yourself. Tell us about yourself is the other way of asking introduction. So tell us about yourself. Your background includes, especially when you are not yet financially independent, family is your important part of the family, and family is important part of your life. Okay, chalo. So why this program? What do you know about AI so far? I am using AI in daily life. I am also implementing AI in stock markets and automating things. I use AI for researching, and I use it for studies as well. Okay, how AI works? AI works mainly on machine learning algorithms, and it has a set of data, a set of instructions on which it answers the questions. So until unless there is a lot of data, it is not very effective. AI Yes, can't be we very can say that. What are the environmental bad effects of AI? AI uses a lot of data, so we need data centers to store data, and it consumes a lot of water and produces heat. Very good. So that is the one of the major impact, negative impact of AI. Very good. What were the major takeaways or what did you observe about the AI summit which took place in Delhi? ये आप सभी के लिए relevant है गुरुजी, वैभव जी. ये क्वेश्चन सबके लिए relevant है जो पूछ रहा हूँ. AI आजकल आज मेरे दिमाग में जब मैं सोच रहा था और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो AI के रिलेटेड आ सकते हैं. तो ये मत सोचो उनसे पूछ रहे हैं AI में जाना है तो आपके लिए relevant नहीं है. So your takeaways from the AI summit, what did you observe about? Yes, my father actually visited there. He told that many of the things were imported from other countries, but also India is growing. Companies like Sarvam and Multipack AI are providing software services and improving. India is still not very ahead in the race of AI, but still trying to compete with other giants. So what all we will be teaching you? ऐसे पूछ सकते हैं या why BBA AI? Why this program? As I mentioned, my interests lie in the intersection of finance, business, along with technology. So, BBA in AI integrates all the subjects of management along with the AI. Okay. Integrate all subjects of management with artificial intelligence. Okay. Subjects like management, finance, and management is not no subject. It is global gyan.
बी स्पेसिफिक, थोड़ा कर लो. दिक्कत Like करें like financial management, financial marketing, accounting, management accounting, marketing. Okay. future projection. What are 4 P's of marketing? I don't remember, sir. You okay? You don't remember? It is there in business studies, I think. Yes, yes, yes. Who is the IT minister of India? I am not sure, sir. आप जितने भी आने वाले हैं मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, एंड जिस स्टेट का इंटरव्यू है, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, सब पता होना चाहिए. कल को कोझिकोड होगा तो केरला में क्या चल रहा है, किसकी गवर्नमेंट बनी है, इलेक्शन का भी पूछ सकते हैं. हाँ, जहाँ जाना है. और सेंटर. व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस CBSE controversy, which is now the second one which has come to the light? Are you aware? Yes, yes. Hmm. The OSM was the new technology with CMP. No. CBSE exams, plus two exams related, there is a fault. There are faults which are in discussion. Huge hue and cry is there in the country. Are you not aware? You don't read newspaper. You don't watch Times of India 2 times, 3 times in a day, like your mentor told you 10 times. Huh? You must keep a track. 2 questions at least on general awareness are very much expected. The answer sheet replaces and the By blurred scanned copies uploaded. and mistakenly somebody else's Copies copies were used to dispatched. calculate marks for someone else. It is all very big problem. So you should be aware, and how to solve it also you should think. They will ask. They can ask even up to that level. This is a Pune based program. हाँ जी, हाँ जी. Have you been to Pune before? No, sir. Which other states than your states you have visited? I have visited to Mumbai, Maharashtra. I have visited. I have visited Punjab, Sikkim, and Gujarat. पंजाब इज also. योर ओन स्टेट, मेंशन नहीं करना, ध्यान रखना. एमी ऑल समझ जाएंगे, कम्युनिकेशन एरर, हम कहते कुछ हैं बताता कुछ है. मुंबई. Maharashtra, Gujarat, Hmm. and Rajasthan, and eastern states. I have visited Sikkim. Okay. What was? How do you compare Mumbai with Ludhiana? Mumbai is seen as financial capital of India, whereas Ludhiana is majorly a manufacturing hub and textile hub. Mumbai has more opportunities, I feel, from Ludhiana, a better business idea and a better work environment also. It has an improved and a way better startup ecosystem also. Infrastructure बोला. Infrastructure wise, Mumbai is way ahead. Metro, local, public transportation, all these are our Mumbai is way ahead. Where do you see yourselves 5 years down the line? 5 years from now, I see myself as a specialist in tech and business. It's not about just learning from college. I feel learning is a lifelong process. I will keep learning and build a own business in few years. I'm not sure what to do, but I have this blurred idea. You have so much interest in tech. You should have taken non-medical, gone for engineering and computer science. Yes, sir. I believe that I now have developed interest in tech after the revolution of AI. But I always Why we should select you? uh, I am not just a child who is just scoring marks and getting things. I am doing things other than books, learning from self-learning and from family experience. Tell us some of your self-learning uh, initiatives. Sorry. Tell us what self-learning initiatives you have taken. Yes, I have learned artificial intelligence all through my own self. I studied through internet, did learnings from YouTube, also searching from courses regularly. This is one of the examples. Which courses you did for AI? I am currently doing Anthropic Academics course. What is your favorite subject? Economics is. What are giffen goods? Giffen goods are the poor quality goods. And what are Veblen goods? Sorry, What are Veblen goods? I am not sure. What is law of game?
Law of DMU states that every subsequent unit consumed by a rational consumer, the utility derived from it will be less compared to the previous unit. And what is the difference between the cardinal approach and your ordinal approach? Uh, I don't remember, sir. And what are the ways to calculate GDP? It is calculated through expenditure method, income method, and value added method. And what is triple identity of income, expenditure, and production? What is the difference between GDP and GNP? GDP is basically gross domestic product, which includes all the income from people of country, even if they are residing out of the country. And GNP only includes the gross net product, which is of the particular country. What is WPI? I don't know. Wholesale price index. Some items are calculated on WPI for adding, multiplying them with the quantity and price, and some of them are at CPI, Consumer Price Index. What are the functions of RBI? RBI controls repo rate. RBI is सबसे पहला फंक्शन, सबसे बड़ा 1 रुपए का फंक्शन पहले बोलो ना. regulator, Regulates the regulatory banks. authority. Regulate Regulatory authority for banks, central bank for other banks. These are the two top ones. Then comes what you say, repo rate. What are the top responsibilities of SEBI? SEBI regulates the stock exchange of India. It keeps an eye on what is happening in the market and also suggests changes if required. Important stock markets of India. Stock markets, index size. You are asking Nifty, Bank Nifty, Sensex, and No, Bank Nifty. NSE, BSE, markets है यार. National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. Hobbies. Hobbies is playing sports and table tennis. टेबल टेनिस का पता है कुछ? Major उसमें टॉप प्लेयर्स हम मालूम इंडिया. इंडिया का नहीं आइडिया. तो इंडिया का मेन वुमेन वर्ल्ड का, और क्या उनका स्टाइल है? Which country prime minister visited recently? Where India, Indian prime minister visited which countries recently? Norway. More. Uh, they visited UAE also. Yeah, UAE, good. And Italy. Italy. Top three. I'm not remembering all. But top three, what come to my mind are these. Scandinavian countries. ठीक है, ओवरऑल गुड है, होना चाहिए सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा दुखी नहीं चेहरा रखो, गुस्सा और दुखी दोनों. हाँ, हाँ, बीच में कहीं 2-3 जगह रिलैक्स रहना, स्माइल कर, दुखी वाला चेहरा, गुस्से वाला नहीं रहना. ठीक है. फ्लुएंसी की तरह दिक्कत लगी हैं? फ्लुएंसी की तरह दिक्कत नहीं लगी. है, एवरीथिंग डोंट हैव इतनी एवरीथिंग. होती है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बच्चे बोलते हैं उससे अच्छे बोलते हैं. ठीक है, चलो शाबाश, गॉड ब्लेस, खुश रहो. हैंड एक्शन में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा है. मिस हो जाते हैं. और 1-2-3 चीजें, एक YouTube की वीडियो रिकॉर्डिंग है क्राइस्ट के लिए, वो ऑनलाइन ही थी, आज फिर से मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ. उसमें बैकग्राउंड कैसी रखनी है, सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन इंटरव्यूज इज कवर. जो लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ, लड़की के साथ भी अलग थी, एक लड़के के साथ और, यहीं का था अपने लुधियाने के. सिम्बॉयसिस ने क्राइस्ट के लिए थी, वो हमने यूट्यूब पे डाली, 1,90,000 व्यूज हो गए. अच्छी है वो, उसको देखो, उसमें सब इनपुट्स दी हुई है, पीछे कैसे लाइट कैसे नहीं पीछे होनी चाहिए, फ्लैशी नहीं होना चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर नहीं होनी चाहिए. ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं ऑनलाइन इंटरव्यू. बिल्कुल बेसिक चेयर होनी चाहिए, पीछे दिखे ही ना चेहरा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए. एक लड़का दे रहा था मॉक ऐसे से, वो पापा की उसकी रिवॉल्विंग बड़े से बॉस वाली चेयर पे बैठते थे. क्या है भाई, आप इंटरव्यू दे रहे हो, कोई उनको थोड़ा रिक्रूट कर रहे हैं. ठीक है, चलो शाबाश, ऑल द बेस्ट. देवन बाबू लेट क्यों आए? बाद आज एम्पेयर दे रहा था फर्स्ट टाइम.
एनपेट हाँ अच्छा ऑन मॉक दे रहे थे अच्छा कैसा हो गया अच्छा हो गया बड़े कॉलेज ही हैं यार एनमेट तो नीचे नीचे है अच्छा अब आप बताओ जो 428 क्वेश्चंस हैं आपने शुरू कर दिए नंबर बताओ कितने तक पहुंचे हो 40 ये भाई साहब 80 तक पहुंच गए 80 हाँ तो अब आप लोग आपस में फिक्स कर लो यार इतने यहाँ आ जाओ आईएमएस में बैठ के यहाँ बैठ के करो बीच में कोई ज्यादा जिसके लिए ना पता चले यू कैन इवन डिस्कस यहाँ लिखते जाओ एंड में जहाँ डाउट्स हो वी कैन हैव अ डिस्कशन जरूरत पड़ी तो वी टॉक टू समबडी फ्रॉम इकोनॉमिक्स वैसे मिल जाता है सब कुछ जितनों का हुआ है कन्वर्जन ये दिस इज द पार्ट ऑफ प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो देखने शुरू किए सबसे पहले अपना जो माल है ना जो स्पेशली मार्केटिंग की एक प्रेजेंटेशन है जो सर ने डाली है एक रेशियोज पे है उसमें सब फाइनेंस का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी कुछ उसमें थोड़ा हाँ और एचआर भी है और बच्चों की मॉक्स हैं वो वेरी रेलेवेंट लेटेस्ट अभी है मैं आज सोच के आया था करंट अफेयर्स पे मोटा मोटी ये कवरेज दे देंगे रशिया यूक्रेन वॉर अब देना और कोई देना चाहता है मॉक इंटरव्यू आज ओके तीनों ने देना चलो करो आज हमने भी देना चलो एक मिनट यस जय माता प्लीज what makes you afraid So what makes me afraid, I would say, is something that I'm not really prepared for. If I'm prepared for something, I know I can tackle it. When I'm not prepared for something, I don't panic. But definitely, I won't say that I am fully confident that I can face it. So while it does make me afraid, I'm still ready to face any situation that comes my way. what is in your view is the solution to the Ukraine Russia conflict now So well, as you know that this conflict has been going on for almost 3 years now, and still like of course like India's stance has always been promotion of dialogue between the two countries, and that's personally my stance as well. Unless and until the two countries sit and talk and negotiate and provide their side of the conflict, then no resolution can take place. Only negotiation and dialogue can resolve this conflict. okay suppose India hosts a dialogue between the two Yes. what is likely to be the outcome and where the things were stuck when USA tried to mediate which were the points where the things were stuck things got stuck So, well, for that we'll have to understand first of all why the conflict started in the first place. The conflict started because Russia and Ukraine had a long-standing agreement between them that Ukraine won't join NATO. However, Ukraine violated this agreement and were threatened to join NATO and were also had talks with them. So that's the initial reason why the attack began in the first place. are you sure they had an agreement So they did, I'm sure, pretty sure. okay carry on Okay. After this, the conflict has kind of now devolved into more of a territorial dispute, as Russia is trying to occupy more of its territory, Ukraine's territory. So, if India hosts dialogue, so no one can say for sure what might happen or what might not happen. But again, no binding treaty or permanent agreement was ever finalized you are misquoting so also I am not sure about the USA mediation. okay so carry on So as I said, no one can be sure about at what point the talks might get stuck. That's why I no cannot no say for sure. चलो बाकी से I'm पूछते हैं not फिर sure. एंड में करेंगे
What about Iran and USA conflict? So that's so well, USA has maintained its position that it's doing this for the people of Okay, Iran. effect of Ukraine-Russia conflict on India. So effect of Ukraine. Hmm. Uh, let's note on the positives first. Due to European Union sanctions on Russian oil, India has been enjoying cheap purchase of oil from Russia because of the EU sanctions on Russia. However, India has also faced a lot of international pressure because even though India is calling for dialogue, India has been purchasing Russian oil and has maintained strong खिचड़ी bilateral. बना रहे हो ना, इधर की भी बात कर रहे हो, इधर की भी कर रहे So, हो. No clarity, no good. It's not good communication the way points are coming. okay. So how should I speak? So you should be very clear how affects its effects on India. Okay, First, positive. the international crude oil prices went up. International crude oil prices went up and availability reduced. Yes. From last many months, US has sanctioned that no country should buy Russian oil, and India is also one of the sanctioned countries. So India is not able to buy Russian oil. Are you not aware about this? You should be aware. Macro level है. So once India is not able to buy Russian oil, so India has to search other sources like Iran or UAE or Saudi Arabia or Mexico, etc. So this takes out a lot good quantity of oil from our supply chain. Okay. These are two macro level immediate effects. Macro और बड़े पॉइंट तो बोलोगे ना, Yes, sir. प्राइस इंक्रीज होता है इंटरनेशनल और Availability. availability क्योंकि India has to look at other options. Direct impact. Iran USA conflict का impact on India. So fertilizers have decreased by 50%. India imports 90% of its crude oil needs, and that has been impeded due to the Strait of Hormuz. 90% नहीं affected हुआ. नहीं मैंने Almost बोला 90%. 20% of India's oil comes through Strait of Hormuz. नहीं, overall I'm saying it imports 90%. मैं ये नहीं कह रहा 90% effect Okay. हुआ. Yes, sir. I was saying मैं बस एक context में डाल रहा था. तीन चीजें हैं ना अलग अलग. Yes. One is LNG, natural gas. Then is LPG. Fertilizers. Third is fertilizer. Then is this crude oil. इन सब पे impact है. Yes, sir. Or plus India used to get when it used to get oil from Iran at dollar 5 to 10 less discount than world market, than worldwide prices. So that dent is there. Number two. One is availability of energy needs. Secondly, 10 to 10%, 5 to 10 dollar discounted prices crude oil which India was getting is not getting. Thirdly, Iran was the only country, only country which used to trade with India in rupee. You did not have to go and buy dollars. So depreciation में भी आ रहा है. हाँ जी बच्चे. Depreciation का भी इफेक्ट आएगा. और depreciation को भी वो करेगा catalyze रुपये की. हाँ, ये उधर भी इम्पैक्ट है ही है. इमीडिएट नहीं है क्योंकि पिछले 7-8 साल से कम ले रहा था इंडिया ईरान से. सर इम्पोर्ट कवर भी क्रूड ऑयल का था 70 डे का, एलपीजी का सर 5-10 डेज का. कॉमर्स के अकाउंट्स के अच्छा मैथ्स के वो. What is Euler's number? What is? Euler's number. I don't know. And, what is standard deviation? Standard deviation is basically all the values when the mean is subtracted from them and they're squared to reduce their error, and then they're divided by the frequency, and
It's in simple terms, it's the square root of variance. What is integration? What is Integration integration? Is area under the curve. Basically. and its applications. Application. Not sure. Pressure. What are imaginary numbers? Imaginary numbers are basically iota. It's the square root negative one, and these numbers are used to solve equations. However, they only exist theoretically. And what is the difference between permutation and combination? In permutation, well, the formula for permutation is you divide by r factorial as well, while in combination you divide by r factorial. In permutation, you don't. Uh, Permutation also accounts for the different types of arrangement between the values, while combination only accounts for the selection of the values. What all is covered under monetary policy? RBI's monetary policy. Are you aware? So the interest rates, What else? interest rates ये and सिर्फ interest rate नहीं है, CRR, foreign repo rate, yeah, reserves. So foreign reserve, gold reserves and all. even inflation projection, GDP growth projection, lot of things are covered. Okay, sir. Which are the top rating agencies? This is the top. Rating agencies. Are you aware or not? No, sir. पढ़ लेना थोड़ा, पिछली बार भी एक पुरानी इंटरव्यू में भी आया हुआ. Rating agencies का रेटिंग एजेंसीज आप बोलो इंडियन एंड फॉरेन. इंडियन जैसे है क्रिसिल, okay. Certification. फॉरेन में तो कई सारी S&P, Standard and Poor, then Moody's. CSO, NSO करके भी तो कुछ है ऐसा सर. I think government के. Anything you know about big data analytics? Big data. How it works? So I'm no, sir. Not aware. Hobbies So my hobbies are playing football and guitar. and guitar. Guitar. Yes. How do you relate football with business? Sir, since I was a football team captain, I feel like this definitely taking ownership is the main point that relates to business because as team captain, I had to take accountability for the team's performance. And as a business owner or as an employee as well, I'll have to take ownership for my actions or for what has happened as a direct result of my contribution to the business. So I feel like football taught me responsibility and ownership, and that's how it relates to business as well. 15 years down the line. So 15 years, I haven't really thought. Well, my long-term career goal is definitely to enter business, something to do with entrepreneurship, maybe start my own firm, or maybe I'll uplift my family business. However, right now, in the next 5 years, I just want to be admitted into this IPM program and complete my studies Your first. biggest achievement so far? So my biggest achievement is definitely my research paper that has also been published. My topic was how teacher course-related humor affected student engagement in class in India. What were the outcomes of that research paper? So basically, what we hypothesized was that the teacher's course-related humor doesn't directly affect student engagement. Instead, it indirectly affects it. So, according to our findings, what we found out was that teacher humor uh, first generated um, first generated interest, then cognitive interest. So it doesn't, and then it affected engagement. So, for example, had teacher humor affected engagement directly, it would have been a direct relation. But our research paper, just like the hypothesis, established that it is an indirect relation because it first affected interest, then it affected engagement.
Which field of management interests you most? Sir, operations. Other than that, Sir, and why it interests you? so because I visited the my father's factory, and I've also seen how to handle these operations. That's what I've been most involved in. I've even taken some managerial decisions in the factory myself, such as supervising the development of a raw material software. And that's why operations I feel like interest me the most, especially because it deals with efficiency. What are the main objectives of operations management? So definitely to maximize efficiency. Efficiency is a very broad term. So basically using as wasting as less resources as possible to achieve the same or even better outcomes. Difference between a manager and a leader. So a manager is someone who can just give instructions. Uh, but I feel like a good manager is also a leader, which means they can uh, take the whole team forward and keep boost their morale as well. So you are not able to clearly tell what are the differences. So ये books से करना है. बुक से क्या आपने सोच के खुद ही पा सकते हो, इसलिए उनमें इंटरव्यू में है ही, मैं अभी तो ज़रा वेट नहीं करूँगा, करो फिर अगली बार डिस्कस करें। ऑल द बेस्ट। ओवरऑल फ्लो ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, बट वो मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री वो बुक से करने को। लीडर एंड ए मैनेजर, लीडर, पहले लीडर को बताओ, ज़्यादा पॉजिटिव होता है। लीडर गेट्स things done through inspiration. Inspiration. A manager gets the things done through authority. Authority oblique control. Control में yes. पहला बड़ा difference. Leader gets the things done. Get the things done through inspiration. Motivation. Motivation. Setting example. तीन ही आ गए। इधर है authority, control, discipline. Disciplinary measures, warning letter, ये सर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो. पढ़ना पड़ेगा और बताएंगे कि हमारा फील्ड है तो एटलीस्ट तो तो ऑपरेशन जो वीडियो है उसमें काफी कुछ कवर्ड है, व्हाट ऑल इज कवर्ड, जो डोमेन्स वाली है 2 घंटे वाली उसमें ऑपरेशंस होगा. ऑपरेशंस का काफी कुछ कवर्ड है। ऑपरेशंस मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोड्यूस थिंग्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वालिटी and ensure that it's timely delivery, safe and timely delivery within time, stipulated time. So all the best. God bless. खुश रहो। आप लेट आए थे ना, टाइम पे सबसे पहले आप आए हो। जो क्या नाम है बच्चे? ऋषभ। वेरी गुड। किसके लिए करेंगे? ठीक है बच्चे, शाबाश। अपना 155 है। Yes, sir. वेरी गुड, चांसेस हैं काफी स्ट्रॉन्ग। कम प्लीज। आपका मैंने इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ किया, पहले कर चुके हैं, नेक्स्ट एक बार नेक्स्ट में करेंगे फिर से। उसमें आपने वो डालना है अपना क्या, फॉर्ट रेजिलिएंट एंड और कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्लीज। May I have a seat? Yeah, please. Why you got 83% only in 10th? Sir, in my class 12, in my Tenth. class 10th, I was not very serious about my academics and my career. I would say like that. I was not very serious about my academics, and I did not thought well of my जान के future. उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि आप एकदम बैकफुट पे चले जाओ, बाउंसर मारिए आप। Yes. आप चले भी गए, कोई बात नहीं, तो उससे आगे का इफेक्ट हो जाता है।
That's what is their purpose, to shake you up. Carry on. Uh, Sir, I was not very serious about my academics in class 12. In class To 10. be honest, start as a girl. Okay, sir. To be honest, sir, I lack bit of seriousness. तो seriousness कहाँ थी? Games पे, extra curricular क्या था? Sir, I was not also involved in many extra. नहीं तो कहाँ थे? Focus कहाँ था? Sir, I was not very focused during that time. In class 11th, only, I started to focus more on myself and my academics and extracurricular activities. In class 12 you started. In class 11th, I started to focus more on myself. लेकिन जब आप ये बोलोगे कि I was defocused and that's why I got less marks, Yes, sir. so immediately you will ask where was your focus? Sports, extra curricular, कैसे हम इसको justify करेंगे? ये नहीं बोल रहे हैं कहीं पे भी नहीं था. थोड़ा health issues बना देना है. कोविड के आसपास का है. Yes, sir. तो कह देना these were COVID years. कोविड हुआ तो नहीं था. No, sir. COVID years. So most of the teaching I received was online. I was not very सर वैसे comfortable. कोविड खत्म हो गया था उस टाइम पे. कौन से ईयर में पास आउट है? सर 2024. सच्ची रीजन क्या था? पढ़ते कम थे. यस सर. तो क्या करते थे? वही तो जानना चाहूँ. खेलते थे कुछ? क्या? सर स्पोर्ट्स भी खेलता था बट वो प्राइमरी रीजन नहीं था. क्या था? क्या स्पोर्ट्स में? सर स्पोर्ट्स ताइक्वांडो. तो बोल लो यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा. थोड़ी स्टोरी बनानी पड़ेगी. ओके सर. स्टोरी. हम वीक में फंस जाएंगे. Okay, थोड़ी sir. सी बना. ओके. Okay, sir, during my 10th standard, I had, I should admit, I was not able to strike a balance between my taekwondo preparation and, plus two academic preparation. ओके सर. So that affected my class 10th marks. ओके सर. And now, sir, साथ ही बोल सकते हो smartly. Now, sir, in the class 12th, I have already improved, and you see, I have done well in my IPMT exam also. Yes sir. Introduce yourself. Sir, my name is Rishabh Kaur. I come from Ludhiana, Punjab. My father is into a hosiery business and my mother is a homemaker. I've done my primary and secondary schooling from DAV Public School, Ludhiana. In class 11th and 12th, I opted for commerce stream and scored 94.6% in my class 12 examinations. Apart from my academics, I'm also an athlete in the discipline Taekwondo. Uh, Last year alone, I participated in 4 state level Taekwondo tournaments and secured podium positions in all 4 of them, including state level school games. I also participated in DAV. Taekwondo is there in Olympics or not yet? Yes, sir. It is an Olympic sport. Taekwondo is an Olympic sport. So it's a good. Why don't you continue it? Sir, I would say that in India, there's no future, there's no such future in sports. The condition of sports is not very good in India, and the sports person are not earning that much. So how to improve that situation? If you are the sports minister, how will you improve the situation? So first of all, I would try to improve the sports infrastructure in India. I would try to build new facilities and sports academies for Okay, athletes. infrastructure. Right? What else? Sir, apart from that, I would uh, I would also I would also try to apart from that I would also try to improve the situation of coaches in India, like more trained coaches for athletes. Like the current situation, the coaches for athletes are not that skilled. What else? You also need to give marks for sports Okay, sir. which are not there present. Yes, sir. Fundu answer. Then you have to also improve sports quota, Yes, sir. sports quota related admissions, Yes, sir. admissions for
graduation and higher education Yes, sir. and post graduation. Yes, sir. जैसे ये बोलोगे ओके सो यू वांट कोटा देयर आर ऑलरेडी सो मेनी कोटास you have to say कि sir when you will appreciate sir when we have to do 10 hours practice every day Yes, sir. and we have to do approximately 2 to 3 hours of fitness training so it takes around 13 hours off or Yes, chalo 8 to 8 to 10 hours of our prime time Yes, sir. non-sleeping time off and as athletes we are recommended to sleep for 8 to 10 hours a day Yes, sir. so the left out time for improving the academic part Yes, sir. is very less many Yes, sir. times we were the athletes or the good sports people are irregular in the classes Yes, sir. so ये सब बोलने का Okay, अगर sir. ऐसा आ गया मतलब ऑन द फीट आपको सोचना शुरू करना होगा Yes, sir. ओके एंड कॉमर्स क्यों Yes, sir. What is your favorite subject? Can you please repeat? What is your favorite favorite subject? My favorite subject, I would say, is accountancy. Accountancy. What are the different ways to chart depreciation? The different ways to chart depreciation are different ways where written down value method is one of the methods. Another method is fixed charge method, in which we charge a fixed amount of depreciation every year. Written down value method, it is basically similar to compound interest. The value of depreciation compounds every year. What are shareholders? Shareholders are the partial owners of the company. The company is divided into shares, and shareholders buy shares of the company and hold ownership. Shareholders earn profits in the form of dividends, which companies declare out of their profits. Okay. Interest on debenture is comes under what head of cash flow? Interest on debenture, it comes under financing activities. Okay. And what are the three financial statements? Three financial statements are balance sheet, statement of profit and loss, and cash flow statement. sometimes they tell you there is a Bisleri bottle Yes, sir. on the table Yes, sir. they can tell you kindly make how the balance sheet of this company would look like can you make it Bisleri company bottle making company Yes, sir. what kind of balance sheet they would be having Sir, in the balance sheet of a company like Bisleri, first we will have to maintain stock of cash. We would have stock of cash. Then we would maintain stock of water bottles. नहीं कुछ नहीं बोलने नहीं है बना के दो Okay, sir. अर्जेंट है आंसर बना के कब भेजने हैं आपने आप भेजो अपना उनके लिए वेट मत करो जितना जल्दी सबमिट करोगे उतना अच्छा है
Sir, balance sheet would be somewhat similar like this. Creditors, capital, liabilities, that's all. Assets, cash, bank, stock, plastic bottles, okay. Labels, okay. Water कहाँ है? Clean water, So we could also add trucks for transportation. They would- yeah, assets would be there. Machinery, label, plastic machinery, patents, trademarks would be assets. और उधर shareholder capital, equity, borrowed capital, सब इतना ब्रेकअप बनाना था ना. सिर्फ कैपिटल और क्रेडिटर दो चीजें लिख दी बस. ठीक है ये नहीं ना. नहीं sir, ठीक नहीं. फिर इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लिमिट, सीसी लिमिट, पैकिंग लिमिट, देन द मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स. आई थिंक जो मनी आती है वो तो इधर नहीं आएगी, जो आना है पैसा कस्टमर से वो एसेट्स में आएगा, करंट एसेट्स में. अब उधर लिखा And है. so फॉर्मेट हमारा I think दूसरा होगा कंपनी के लिए. तो सिंगल लाइन हाँ, फॉर्मेट होता है. एक लेफ्ट और राइट, ये तीन चार रेटिंग नहीं है. तो बहुत बेसिक है. मेरे को भी आई एम नॉट ए फाइनेंस गाई बट स्टिल आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट वेरी कंफर्टिंग. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फॉर ए 3 rupee fall in the profit of a company, what will be the impact on profit and loss account, cash flow statement, and balance sheet? What will be the impact in all the three? For a 3 rupee fall in profit, what will be the impact in balance sheet? What will be the impact in profit and loss statement? What will be the impact on cash flow statement? Sir, in statement of profit and loss, first of all, the revenue would decrease. Revenue कहाँ से हो गया? So the profits. Income or loss from operations होता है. Yes, sir. If it is loss from operation, it is in bracket minus. Yes, sir. Income, if it is profitable, then it is like the 3 rupees impact here. ठीक है, वर्डिंग ध्यान रखना राजा. वो लोग, मैं तो आपका मेंटर बोल रहा हूँ, Yes, sir. वो तो बस ये कैच करें कितनी की जानकारी है. प्रॉफिट एंड लॉस में Sir, in the profit and loss statement, sir, the profit at the end, which is calculated by reducing the expenses from revenues, would decrease by 3 rupees. ठीक है. बेसिकली प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 के 3 इम्पैक्ट. इधर बोलो कैश फ्लो. Sir, in the cash flow statement, the net cash flow would decrease by 3 rupees. 3 रुपीज, यही तो कहानी है. बोलो जी. लेवल चलो. हाँ? वो छोड़ो, किसी को कोई पॉइंट कैच हो रहा है? बैलेंस शीट में आई गेस कैपिटल से सबट्रैक्ट होगा. तो मतलब बैलेंस शीट में ₹3 का इम्पैक्ट आएगा. हुआ कहाँ वो अलग छोड़ो. In balance sheet there is income or loss from operations on the left side. So if it is income, it gets added into the left side. If it is loss, bracket में आ जाएगा minus. तो वो तो impact तो 3 rupees का ही रहेगा. इधर भी profit and loss में भी 3 का रहेगा. Cash flow में different आएगा. क्यों? क्योंकि if it is a profitable company, so tax calculated on it will have impact in the cash flow. The tax applicable on 3. If it is 30% bracket, then the impact will be 0.9. सर लॉस अगर खर्चे बढ़ने की वजह से हो रहा है तो डिफरेंट हो सकता है. नहीं, different हो सकता है, अलग बात है. नहीं, उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है कैश फ्लो. ना, मैंने साथ में ही बोला, if the company is profitable and the income, if this 3 rupees is a taxable income, then the tax applicable on this, मैंने कोई बोला 30%, 20%, 10%.
If the company is profitable and this 3 rupees is a taxable income, then the tax applicable on this will be a minus in the cash flow. To that extent will be the impact of 3 rupees on the cash flow. अगर 10% है तो 30 पैसे 0.3 रुपीज समझे बात ये वो जानना चाह रहा है आपका समझने का तरीका ट्रिक समझ आ गई कि नहीं आ गई if this 3 rupees is a taxable income is a part of the taxable income then the applicable tax on this will be the only impact in the cash flow statement. एक क्वेश्चन में बार बार पूछा हुआ है कई बार पूछ लेते हैं चलो अगले में पूछते हैं okay why cash flow statement is also important along with P&L profit and loss and balance sheet. So cash flow statement is a important financial statement because it shows the inflows and outflows of cash from various activities of the business. We can know where the cash is going out of the business and from where. इसको और ब्रीफ में सम अप करना हो प्रॉफिट एंड लॉस and balance sheet are important. Yes, sir. But cash flow is the statement which tells us about the liquidity position. Liquidity position Yes, sir. of a company. अब second line आती है company may look profitable on P&L, but may have to change hands, may have to sell its equity if it has already reached asset test point for raising more capital, more debt, and it has to pay and it is in negative cash flow for next 3 months hugely negative cash flow for next 3 months and has statutory dues to be paid statutory dues like property tax income tax TDS PF provident fund etc जो हम कर नहीं सकते delay so the, and electricity bills etc so to know and to manage to ensure the liquidity position of a company is also well maintained cash flow statement and projected cash flow statement is also very important. What are the different sources of funds available to a businessman? So to a business, the various sources of funds are first the company can raise funds from equity funds. First the company can raise equity funds, or the company can raise a loan from a bank or a financial देखिए भाई institution. long term loans short term loans working capital loans Yes, sir. packing credit ये exports वालों को मिलता है packing credit some advances चलो ये छोड़ो ये तो रनिंग में आ जाएगा ऑपरेशंस एंड देन व्हाट यू सेड इक्विटी सेलिंग इक्विटी एट व्हाट पॉइंट ऑफ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कभी पूछेगा इंटेलिजेंट होगा तो आई एम इंदौर और शिलोंग लेवल पे पूछ सकता है एट व्हाट टाइम इट इज बेटर टू सेल योर इक्विटी एट व्हाट पॉइंट ऑफ बिजनेस क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो आपको सीधा नहीं देगा वो कहेगा विच इज बेटर यू शुड सेल योर इक्विटी टू गेट फंडिंग or you should raise debt bolo So there are various factors to determine that. Sir, for example, one of the factor is state of market. In a bullish phase, investors are more likely to invest in equity funds. सबसे बड़ा पॉइंट इससे बड़ा है कोई और बोलो Equity for expansion के time इट इज आई थिंक द मेन इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो जानना चाह रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो ये है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द वे प्रॉफिटेबिलिटी वे रनिंग फॉर हाउ लॉन्ग द बिजनेस इज देयर if it is at what stage the business is there is it in the starting stage or it is in the maturing stage or it is in the expansion stage when it is in the starting stage आप लोगों ने देखा शार्क टैंक में आते हैं लोग what they say I'll buy 10% I'll buy 20% for this much they agree quickly because the person who is putting his money there is no interest on it he is putting money on you basically on your credentials on seeing what product you are taken up on seeing your projections etc etc
his money can go totally away. His money can become zero. So he is taking risk. If you take debt, you have to pay 14-15% interest, and you will not be able to raise a certain amount of debt based on your turnover, which will be less. So it is, sir, these things, I think one of the most important essence, or one of the most important aspect which needs to be considered while deciding whether we should sell the equity to raise funds or we should take more debt to raise funds is at what, stage the business is. If it is just at the founding stage and somebody is investing in equity, it is worth. But when you are at a growing stage, when you know your products are established, when you know your markets are strong, I don't think, and you know the prospects are strong as a proprietor, then your equity you should hold and you should raise debt. Because you will be sure to serve that debt. 15% बोला ना इंटरेस्ट पड़ेगा. If you take debt, it will be a big liability. There will be cost of capital. You should have clarity that you can serve that debt well. You can repay the interest, you can repay the principal. At that time, you should raise debt. So if the stage of the business is just very, very initial, rather than taking more of debt, you can get investors into your equity. And if the stage is where your product is established, you have established your markets, and it is at a growing stage, fifth year or fourth year of business, from there, and you are knowing that with your operations and expansions, etc., you can easily serve the debt, then you should take the debt. Problems faced by Punjab these days. Sir, I'm not really aware. You don't deserve to be an IM then. कितनी बार बोल दिया मेरे भाई. दूसरों की इंटरव्यू भी सुन रहे थे, तब भी आपको बोला गया कि यू हैव टू रीड ट्रिब्यून इंडिया 2 times. tribuneindia.com for local flavor. Times of India.com. These 2 things you have to serve 4 to 5 times a day. नहीं करना तो फिर डॉक्टर ने लिखी है एंटीबायोटिक खानी, खा रहे नहीं, फिर सिलेक्शन होनी नहीं, फिर दुखी हो गए आप भी, मैं भी. 20 बच्चों का हुआ है, आपका 24-25 और होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. बट मानोगे कहना तब ऐसे भोले भाले बन के नहीं. खुद देखो कितना बुरा लगा आपको ये आंसर देते हो. आई डोंट नो. You are coming from a state where you are staying for last 14-15 years. Every time you are moving out, you don't know what is the problems faced by Punjab. The biggest problem faced by Punjab is unemployment, like most of the state. Unemployment, macro level, because few industries, because we face almost 3 decades of terrorism. 3 decades of terrorism. Because of that, and being a border state. And being a border state has its own risks. So risk profile is high. Unemployment biggest issue. Then second biggest issue. Almost हम कंट्री का बोलते हैं, कंट्री का आता है 60% population is directly indirectly employed in agriculture. When it is Punjab, almost 80% people are directly indirectly employed in agriculture. And out of this, almost 85% are small and marginal farmers, जिनकी लैंड होल्डिंग लेस देन 4 एकड़, जिनकी अर्निंग बताया ना 15 से 15,000. सोते तो नहीं ना क्लास में, फिर दिमाग कहाँ होता है. ये प्रॉब्लम पंजाब की है कि नहीं है? Yes, sir. आपके पंजाब के ऑलमोस्ट 64% people are earning less than 15,000 per month. Is it good income? No, sir. Can somebody send his 3 kids to school with good uniform, bags, everything?
Can he buy a aircon, scooter, TV? Can he live a good life? Can he have good clothing, travel, etc.? No. His buying potential is also less. Then he takes loan to run his, to take care of his marriage in the house, to take care of sons, sending him abroad, etc. That is how he gets trapped in the debt trap. Macro level. ये बार बार बात हुई है राजा जी, पंजाब की स्पेसिफिक नहीं हुई. अब मेरे को कोई पता तो है नहीं, आई एम ने विद गॉड्स ग्रेस 2 3 4 क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग. But even if they don't come, you know you have 1,000 points here in your percus to take out and fire. तो इसको रिलेट कर दो ना यार. पंजाब में almost 80% people are directly indirectly dependent on agriculture. Their incomes are very less. 85% are marginal and small farmer, less than 4 acre. उनके per month earnings are very low. तो ये हमारी प्रॉब्लम है. इसको इम्प्रूव करने की बात भी हुई है. अब बताओ क्या सोल्यूशन. ना बताया दो दो जिन्हें बताओ, ये क्लास में डिस्कशन हुआ है, नहीं पता, फिर की फायदा क्लास का. कैसे जाओगे? आई एम शिलोंग सिरमौर नहीं लेगा वो, अवेयर बच्चों को लेगा. 50% से ज्यादा रेडी बच्चों को लेगा. हमारे को कटोरी में डाल के चम्मच में भी डाल दिया सर ने, फिर भी नहीं खाना खीर. आप बोलिए देवन सॉल्यूशंस, अभी जो हम बात कर रहे हैं. हाँ, पंजाब की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. सर सीधे होके बैठो थोड़ा. हाँ इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर से फोकस मिले. हाँ, ये तो हो गया. करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए ये भी बताओ. सर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जाना है इंग्लिश. हाँ हाँ, इंग्लिश. Since we are from Ludhiana, there are big industries in Ludhiana such as the bicycle industry. If these industries are expanded to other rural parts of Punjab, the manufacturing units, then they can help other people. See, ठीक है, improve industry is a good point. Next point is give incentives. Give incentives for GST exemption, like Baddi did. Exemption for 8 years. For 8 years, subsidized electricity, etc. So that industries come to you. अब आगे फार्मर की इनकम बढ़ाने के सॉल्यूशंस. Subsidies, give more subsidies. बस वही दे दिया. ये तो बात ही नहीं की. मैंने कभी नहीं बोला फार्मर को सब्सिडी बढ़ाओ. आप भी ध्यान नहीं रखते क्लास में, इधर उधर ध्यान भगाते हो. ऐसे नहीं होगी राजा जी. नॉट गुड. At least 3 times I have said what are the solutions for this. So elimination of middlemen, like wholesale का जैसे वो most part of. उससे भी तगड़ा पॉइंट ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप डाइवर्सी, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, पर मैं बार बार बोल रहा था कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम wheat and paddy, paddy is rice, okay, towards cash crops. मैंने कितनी बार बोला मशरूम फार्मिंग, वेजिटेबल. देन सेकंड बोला फूड प्रोसेसिंग. बोला ना बार बार फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग में आता है ब्रेड यूनिट्स, मल्टीपल ब्रेड यूनिट्स ऑन कोऑपरेटिव बेसिस. जो प्रॉफिट 2 कंपनियां ले रही हैं, किटी एंड बॉन, 40-50% प्रॉफिट वो फार्मर की जेब में जाए. ही विल मेक वीट तो बनाता ही है, ब्रेड बना के बेचे. एक लाइन एक्सपेंड होगी, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन. देन चिप्स बनाए पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज बनाए, पोटैटो वेजीज बनाए जो हम मार्केट से लेते हैं 1200 रुपीज ए केजी, जो पैक्ड होते हैं. तो वो क्यों नहीं बना सकते हम लोग? जो उनको हेल्प चाहिए टेक्नोलॉजिकल सीड में, ये वो दो. दैट इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. तो उससे वो भी फूड प्रोसेसिंग में आएगा. वी शुड मेक मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नियर द फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स. चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो वेजीज,
Smiley, etc., which are sold, which make that potato from 2 rupees a kg to 1200 rupees a kg. कितनी वैल्यू एडिशन, कितना कॉस्ट एडिशन हो जाएगा? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए. 200 rupee thing he will sell at 1200 rupees. That is the way to make it profitable. कैश क्रॉप्स में आता है मशरूम, मशरूम फार्मिंग, ये टमाटो, टमाटो, देन ये कॉलीफ्लावर, इवन इम्पोर्टेड जो कैप्सिकम्स होती हैं, बेबी कॉर्न, हाँ ब्लूबेरी, हाँ थोड़ी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, बेबी कॉर्न छोटी, then these kind of things cash crop. They give 4 to 5 times more money wise return to the farmer. But for this cold storages, where he can store his produce, if it is not somebody is not ready to buy it at a good price in the mandi, he can store it there at a reasonable price. So cold storages should be there. Cold chains should be there of cold trains, cold vehicles, that's it. These are the solution macro level. इंडिया के भी यहाँ आ जाएंगे. हमने बोला नहीं उस दिन विकसित भारत यार, इतनी तो बात की फार्मर पे, 60% इंडिया की पॉपुलेशन, उसमें से 85% फिर से मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, उनकी इनकम है 15,000 रुपये, मैक्रो लेवल से नीचे जा रहे हैं हम माइक्रो. उनको जब तक 48 ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन को नहीं उठाएंगे पर कैपिटा इनकम कभी नहीं बढ़ सकती. दे विल बी फर्स्ट टाइम बायर, सुनी थी ये स्टेटमेंट, दे विल बी फर्स्ट टाइम बायर ऑफ मेनी कमोडिटीज, यही बात हुई थी ना. फिर वो फार्मर इंडिया का, पंजाब तो और भी फार्मर ड्रिवन है यार, एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट है मेरे डियर. एक और है इसमें पॉइंट, I don't know whether you will be able to tell it rightly or not. I think you can do it. Like MSP is given on major items like wheat, paddy, etc. For cash crops also, monthly MSPs और बाई मंथली. अब बोलेंगे जी ये कैसे कैसे नहीं, कैसे तो रखो, बंदे रखो भैया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, 100 बंदे स्टैटिस्टिक्स वाले रखो, FMS IM पास आउट्स रखो, हमें चाहिए. दिस हैज टू बी रन like a stock market if the farmer's income has to improve. Bi-monthly MSPs for minimum selling price for all commodities, all top 98% agri commodities should be fixed. Like cauliflower, एक मंथ की चल रहा है रेट 6 रुपए से कम नहीं बिकेगा. We are buying it at 20 on the same day. Farmer is selling 2 rupees on the same day. So he'll start getting 6 instead of 2, 3 times more हो गई income. And if somebody can be more, somebody can be Reliance, somebody can be Blinkit. If anyone tries to buy that commodity at less than the declared MSP for those 15 days, it will be a non-bailable offense. Jail for 1 year and punishment of 50 lakhs. सब सीधे हो जाएगी. और इसको इन्फोर्स करो, फार्मर रियली 3 गुना कमाना शुरू कर देगा मोटा. और फिर आप टमाटो पेस्ट बनाओ, टमाटो केचप्स बनाओ, उनको एक्सपोर्ट करो. गुजरात में होता है बहुत ज़्यादा टमाटो प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. सेम थिंग पंजाब नीड्स नाउ. समझे? Yes, sir. अब ये भूलना नहीं है गुरु, कितनी बारी डिस्कशन होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ पुरानी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, एंड दे आर ब्रह्मास्त्र ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट्स फॉर इम्प्रूविंग कंट्री, फॉर इम्प्रूविंग जनरल वेलबींग ऑफ द कंट्री, फॉर मेकिंग योर 60% फेलो इंडियंस अर्न बेटर, लिव बेटर.
हम लोग यहाँ बात करते हैं एसी कूलर, बेचारा फार्मर सारा दिन गर्मी में रहता है, पेड़ के नीचे सोता है, ट्यूबवेल में नहाता है, घर जाके भी उसको सारा दिन वो गाय का काम प्लस इसमें आता है, प्लस सब्सिडरी सब्सिडियरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, ये डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा। उससे भी उसको कुछ इनकम बनती है, तभी वो जिंदा रहता है। तभी उसके 2 बच्चे होते हैं, वो कहता है एक जा यार फॉर्म, वो तो डॉलर कमा के कोई पेज में रहता है, हम नहीं चलता। 4 एकड़ होते हैं, 2 एकड़ बेच देता है उसके पैसे लगाने के लिए बाहर भेजने। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर स्टेट। And still touchwood, we are, it's God's grace, all are God fearing. Most of the citizens in the country are God fearing, religious minded, whichever the religion it is. The essence of all religions is peace, harmony, truthfulness, honesty, being right on the right side. तब करके चल रहा है देश, नहीं तो हालत खराब है। गुरुजी कब है आपकी? अभी तो डेट नहीं आई इंटरव्यू की। हाँ, तो इंटरव्यू की डेट आने से पहले जरा सा जाग जाओ। ये जो यहाँ कम से कम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, वीडियो जो हैं उनको सुन लो, और जो वो 428 है, आप भी कॉमर्स के हो? यस सर। कितने की है? कुछ नहीं किया होगा। क्यों? कॉल आनी है 4 दिन 6 दिन में, उन्होंने कह देना सिर्फ मोर वालों ने इंटरव्यू है जी, दिल्ली आ जाओ। फिर क्या करोगे? 6 दिन में प्रेशर में आ जाओगे। आप तीनों आपस में सेट कर सकते हो टाइम, 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, ये यहाँ आके बैठना है, यहाँ बैठो, घर किसी आपके घर जाना है, इधर जाना है, हेल्प ईच अदर। मेरे पुराने बच्चे 4 4 बच्चे कर लेते थे, वो कहते थे हम लोग दे यूज्ड टू डिवाइड 100 क्वेश्चंस एमबीए वाले। तो पहले 100 एक ने किए, दूसरे 100 एक ने, फिर आपस में डिस्कस करते थे उन सारे क्वेश्चंस को। तो ऐसे यू नो डिवाइड द एफर्ट, यू कैन डिसाइड अभी 70 तक 40 तक आप पहुंचो, 80 तक आप पहुंचो, तो यू कैन डिसाइड कि लास्ट के 100 आगे के 100 ये करते हैं, आप लास्ट से चलना शुरू कर दो। जिस दिन इकट्ठे मैच हो गए, इकट्ठे बैठ जाओ, हेल्प ईच अदर। वो जो दूसरे लोग आज आए नहीं है, तीक्षण और सिद्धार्थ जी भी कॉमर्स बैकग्राउंड के, जैसे सर ना, तो ही उनको इनविटेशन दे देना, मैं एक ग्रुप बना देता हूँ छोटा सा। हाँ, दे शुड कम एंड सिट टुगेदर और करो एक दूसरे से डिस्कस जाके हेल्प। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पहली बार दिया इंटरव्यू? कोई बात नहीं, ओके, बट जो सुनया आया वो दसना चाहिए यार। आ जाओ मित्र, देना इंटरव्यू क्या रुक जाए कल भी देख लेता हैं? कल भी दिया ऑनलाइन मॉक था वो आगे से अच्छा, फिर रुक जाते हैं। क्या था वो? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बेसिक जीके क्वेश्चन आपने पूछे क्या जैसे? जैसे पंजाब के गवर्नर ओके, हाँ, वो गुलाब चंद कटारिया गवर्नर, हाँ, फिर एंड चीफ जस्टिस भी पूछ सकता है हरियाणा कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन था गवर्नर। उसके बाद पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। हाँ, ये पूछते हैं। मेरे को फिर सारी यूनियन टेरिटरीज के नाम बोले क्या आते हैं ये? कैपिटल हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कैपिटल से पूछे ये, उसमें है प्रीवियस क्वेश्चन है में। उसमें एंड उसके बाद मेरे से फिर एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्लस अच्छा क्वेश्चन। मेरे को फिर फाइनेंस प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि टेक्निकल एनालिसिस के बहुत से तरीके दो बताने के लिए, जिसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स और रेशियो एनालिसिस बता दिया। रेशो पे आगे पूछी कोई रेशो? रेशो स्ट्रॉन्ग करके जाओ, 80% प्रोबेबिलिटी है रेशो एनालिसिस। Which is the most important ratio? Why it is very important? Top 3 ratios. एक आ गया debt to equity, then inventory to turnover ratio is also important in some companies. Asset test ratio. Asset test में यही आता है current assets और current liabilities. एसेट टेस्ट में क्विक एसेट्स होगा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस इक्विटी एक्सपेंस माइनस इन्वेंटरी। दोबारा बोलो। क्विक एसेट आता है उसमें, Quick asset divided by the current liabilities. That is asset test ratio. Basically liquidity ratios हैं. Liquidity ratios, profitability ratios, solvency और ये investor related, उसमें आएगा debt to equity etc. Profit to turnover ratio. टर्नओवर रेशियो वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटेम्पररी भी मैं पूछा था पर ढंग से बोला नहीं गया था। चलो फिर करो स्टेप आ जाओ। मैंने वो स्ट्रेटजी बताई थी ना, ओरिजिन ऑफ द टॉपिक, ओरिजिन पे जाना है। हाँ, लेट अस गिव यू पीस विद पाकिस्तान।
इतना टाइम नहीं मिलेगा 30 सेकेंड्स। Yes, sir. Since 1947. ये जो आ रही है ना जुल्फे कम कर लो, Sorry, sir. उन्होंने कल फीडबैक दिया कुछ कि नहीं इसके नहीं sir, on ये the हेयर कट और कर लो, मेरा अपना फीडबैक है। Sorry. इसको मेरा देखो सिस्टम ऐसे ही होना चाहिए, आर्मी ऑफिसर कटिंग। चलो आगे। Since 1947 independence. Excellent. Good. Origin of the topic. Since 1947 independence, post-partition, Pakistan and India have been in 4 different wars: 1947 War of Kashmir, 1962, 1991 Kargil War, and in all these wars, India has won. But the problem is not just the wars; it is why we have not been able to establish peace for the last 78 years, even though there have been diplomatic conversation Use between both both hands. countries. And however, this diplomatic chance continuously failed after the 26/11 Mumbai attacks, which the Pakistan promoted. The ISI backed terrorist group attacked at Taj and Your Pulwama. 50% time is gone. Now in the balance 50% you have to conclude and give some solutions. Origin of the topic 25, 25, 25. अगर extempore दे दिया गया, almost 20% background. Origin of the topic start अच्छा किया, मैं पूछ हो गया 1947 पे चले गए, इसको और ब्रीफ कर सकते हो। फिर वॉर्स हुई, इंडिया जीता, इसको कोई फायदा नहीं ना, आप इधर ओवरलैप पे आ गए, अगले 25% को खाना शुरू कर दिया आपने, करंट सिचुएशन, करंट इश्यूज को, वो टाइम खा गया, ओवरलैप हो गया आपका ओरिजिन का। उसके बाद आपने बात करनी थी उनका सोल्यूशन क्या है, फिर कंक्लूड करना। तो अब आपका यहाँ से गेटिंग माय पॉइंट, ओरिजिन ऑफ द टॉपिक स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर वॉर हुई, फिर 4 वॉर हुई, इंडिया जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, बट एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यहाँ तक आ गए, 30 सेकंड्स हो गए। फिर आगे का जो सोल्यूशन पे आज क्या इश्यूज हैं वो बीच में गिर गए, फिर एंड में ओवरलैप करते करते सब हलवा बन गया, खिचड़ी बन गई। कोई और आप ट्राई करोगे? So very origin की बात है, but when you talk about the current situation, there is still distrust among India and Pakistan because of the territorial dispute which is occurring in Jammu and Kashmir. Pakistan tries again and again to capture a certain region of India which already has been captured and is being named POK, which is still shown in India's map as Kashmir. Other than that, the current issues between India and Pakistan, I believe they can be solved by देखिए ओरिजिन को ही थोड़ा सा और आर्टिकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो में जाने की बजाय मैक्रो। एक्सटेम्पोर में मेरे हिसाब से मैक्रो चलेगा, जितना माइक्रो में कहीं भी गए फंस जाओगे, उसी में माइक्रो में बताते रहोगे, मैक्रो बड़े पॉइंट्स रह जाएंगे। यही वो देखना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, कैन यू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम ए मैक्रो लेवल, हाउ डू यू व्यू इट, हाउ डू यू प्रेजेंट इट, how do you think of solving it? All this is management trait. So your और कोई पीछे से आप कोई बोलना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा extempore on this? Okay, the good extempore which would have given you 10 out of 10 would be like this. Sir, we are indispensable neighbors. Macro level, very good point. We have fought for many wars, 4 wars. Both are nuclear armed states. This huge point has not come out. कितनी बार सुना पाकिस्तान कहता है मैं न्यूक चला दूंगा, आगे से इंडिया रिप्लाई करता है चला के देख लेना, फिर तुम ज्योग्राफी पे नहीं रहोगे। इंडिया का रिप्लाई यही हो रहा है उसको, वी हैव ए पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन। If one nuke is thrown at us, we can throw 10. So, sir, India and Pakistan are unfortunately or fortunate. Unfortunately, now use karo word negative. I think, sir, India and Pakistan are inseparable neighbors and will remain so. Both have fought a lot of wars. We are still at Cold War situation at present. Any day war can again get triggered. If Pakistan makes another terrorist attack, India has set terms that India will retaliate again.
Any day we are in a Cold War kind of a situation. Both are nuclear armed states. अब ये थोड़ी सी बैकग्राउंड होगी, अब आप आगे आज के दिन में जैसे कि आज कोल्ड वॉर में थोड़ा सा मैं भी आगे पीछे करके अब चलता है, बट कोल्ड वॉर आज की सिचुएशन में आगे वी आर इनसेपरेबल नेबर्स, both are nuclear armed, we have fought wars, अब present में आगे we are in a cold war kind of situation. India has already set a clear doctrine. If next big terrorist attack takes place in India, planned and you know originated from Pakistan, and India gets a proof of it, India will make attacks within Pakistan on the terrorist project, and it can trigger war anytime. So the biggest issue India is facing from Pakistan today is terrorism. So ऐसे में quotable quote use करो sir, good fences make good neighbors. So India should strengthen its own fences, own defense mechanisms, own technological upgradations, own satellite, monitoring, thermal imaging. When the terrorists try to cross the border, is difficult to manage. We all understand, but through technical, improvements, we can start controlling anyone coming easily into our country and making a terrorist attack. So if we can do that, then I think to a large extent, one of the biggest threat which can lead to a war can get prevented. And along with that, I think with pressure, dialogue, and India has taken a position that terrorism and dialogue cannot go together. But in my view, dialogue should also be kept on, so that a day can come where we may be able to persuade Pakistan to stop sponsoring terrorism against India, and we should get international pressure, etc. ये सब point solutions होंगे. सबसे बड़ा solution है strong fences make good neighbors. एंड डिटेक्शन शुड बी सो पावरफुल. जैसे मैक्सिको से कोई आ रहा होता है शिप, या कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे अमेरिका को, उनको अपने आप थर्मल इमेजिंग से वार्निंग आ जाती है. उनके जो फोर्सेज हैं अंदर मॉनिटर पे अलर्ट आ जाता है, उनको दिखते हैं किस कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, वहीं से बैठे हुए ड्रोन से मार देते हैं, या बॉम्ब मार देते हैं, या गोली मार देते हैं. इफ समबडी इज ट्राइंग टू इंट्रूड यू, अपने को भी वैसी टेक्नोलॉजी आर्मी को देनी हो टू प्रिवेंट, एंड नॉट ओनली through road, through land. Sea is also vulnerable. Like the terrorists who conducted 26/11, they came through sea route. तो वहाँ पे भी देखना है कि कौन सी शिप आ रही है, ये अनलाइसेंस टाइप है, इसका कोई सिग्नल नहीं है, या ये हमारे पास अप्रूव नहीं है, उसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उससे वॉकी टॉकी चेकिंग होनी चाहिए. मेक मोर चेक पॉइंट्स इन योर सी, maybe 10,000 more checkpoints, so that next time somebody doesn't come. अभी भी काफी vulnerable है. So why don't you have said to Pakistan, if terrorists attack in India from Pakistan soil, we will fight with you. So you also try to prevent it from happening. Prevention is also good. Macro level. एग्रीकल्चर का दे दे तो, विकसित भारत दे दे तो अपने को पता है कैसे हमने बात की. ओरिजिन है वो कि in India 60% population is dependent directly indirectly on agriculture. Out of that 85% farmers are small and marginal, which have less than 4 acre land holding, whose incomes are just 15-20,000 per month. So until unless that large chunk of population income increases, per capita income and growth of country cannot be holistic and big. And for that, food processing, cold storages, cash crops, MSP for even cash crops, बाई मंथली MSP. जैसे ही आपने ये बोला आई वाला एंड यू नो द लॉजिक, आई हैव टोल्ड यू ही इज सेलिंग उसका भी, बिकॉज ऐसे बोल रहे हैं हमने, बिकॉज ऑन ए डे द फार्मर इज सेलिंग हिज कॉलीफ्लावर इन द मंडी, इन द wholesale market at 2 rupees, and we the retailers on the same day buy it at 20 rupees. So the government should announce, say 8 rupees should be the minimum cauliflower price for a particular 15 days period. And if somebody buys below that, whether corporate or individual or the mandi guys, they will be prosecuted non-bailable, under non-bailable offense. And things will improve. His income can become 4 times immediate. He will be more encouraged to go for it. आपने सुना है कई बारी फार्मर्स प्रोटेस्ट में
अपने प्रोड्यूस्ड पोटैटो के ऊपर फ्लोइंग कर देते हैं। दे फील फ्रस्ट्रेटेड कि हमारे को 2 रुपए 3 रुपए मिल रहे हैं, इतनी मेहनत से हमने इतना बड़ा बड़ा आलू लगाया है, कितना उसको 3-4 महीने सेवा की, पानी दिया, सब कुछ शो किया, टेक केयर किया, और एंड में अब उसको 3 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए, विच इज जस्ट कवरिंग हिज कॉस्ट। सो इन frustration they flow with the crop. Sometimes they throw their cauliflower on the road in frustration. मिल्क के साथ थर्ड है, ये तो है। कॉलीफ्लावर भी बेचारे को 2 रुपए में, क्या हम लोग 20 रुपए दे ही रहे हैं यार। तो लेट देयर बी, इट हैज टू इम्प्रूव। प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी बोलते हैं फार्मर्स की इनकम विल बी डबल्ड इन 19 पे 24 अब 29, बट ही डज नॉट वर्क ऑन इट एज वी आर डिस्कसिंग, एज वी आर गोइंग इन डिटेल। ही हैज टू रिव्यू। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर 3 ही मिनिस्ट्री को अच्छे से रिव्यू कर ले, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये 3 अच्छे से काम कर ले, वो कंट्री में द्वारा उस पावर से हटेगा नहीं। ही इज लिविंग लाइफ ऑफ हिज फैंटेसीज, विदेश यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा। ही हैज ग्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड, so he has some fantasies of good clothing, welcomed by rich people, this, that, great dinner, gala, medals. So he's trying, unfortunately, he's living life of his fantasies. Country is suffering because he is not focusing. मैं कह रहा हूँ 3 मिनिस्ट्री को अच्छे रगड़ दो, लगे रहो, रोज 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर शुड डिवोट ऑन देम, एवरी मंथ full day review of these 3. Things will change drastically for the country. ठीक है, आपका इच्छा है 2 हो चुकी हैं, 3 हो जाएगी, मृगेश के साथ शायद तीसरा हो चुका है, 2 हुए टोटल। अभी है कब, डेट तो नहीं आई, 15 to 18 I think. अभी तो काफी दिन है, तो वी विल डू 2 मोर फॉर यू। बट अब मुझे ये ना ऐसा वीक आंसर नहीं चाहिए कि 30-40 हुए मेरे क्वेश्चन। आपने कितने दिन में कर लिए 70-80? 3 दिन में, 2 दिन में? मेरे को 4 दिन 4 दिन। नोट्स बनाए हैं ना, बस उनको रिवाइज कर लेना उससे पहले। दिस इज द पाथ फॉर सक्सेस। बाकी मैं करंट अफेयर आपको खींच गया हूँ, जनरल क्वेश्चन खींच गया हूँ। अब रह गया आपकी ब्रांच से रिलेटेड, वो आपने करना। जैसे इन्होंने की है 70 क्वेश्चन पर 33 days, सेम शुड बी योर पेस, टाइम बाउंड, टारगेट। एंड देन माय रिक्वेस्ट इज व्हेन यू कंप्लीट, डू इट सेपरेटली, देन हैव अ डिस्कशन अमंग योरसेल्फ, यहाँ बैठ के 4 घंटे। Key points. It will be wonderful. Help each other. God will help you. ठीक है, चलो शाबाश, God bless you. Good है, बहुत अच्छा है, हैप्पी। 70 है, अच्छे से कर रहे हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। 70 is good in 3 days. वो 420 कंप्लीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आप देख लेना, मेरे को मेरा पूरा विश्वास है। क्वेश्चन जो है ना, वो जो पुरानी बुक है 70% ओवर लगता है, जब आप पढ़ोगे उसको आगे। इसको क्लोज कर दो।